मैं आपको आज जो तकलीफ दिया कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम पार्टी में बैठकर एक एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने देखा कि अभी तक 10 एमपी गए हैं 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से, 10 में से 9 एनसी के गए। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात। एक बेग साहब गए हैं 2014 में। हमने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजन दैट एनसी इज एबल टू रीच देयर इज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स। इनका जो वोट शेयर है फ्रॉम अ हाई ऑफ 60-65%, जब ये हमारे साथ तब हम दूसरे नंबर पर आते थे। 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो टू 29%, बट दे स्टिल विन। आई विल गिव यू एन इंडिकेशन। इन 2019 4,55,000 वोट पड़ा है, 1,33,000 यानी कि 29% एनसी ने लिया। 3,22,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है, which is 71%. Yet they went there. For every one vote polled for them, 2.5 votes were polled against them. But that's what election is. So the reason I came here is that I've had some confabulations, is that I'm coming here to appeal to my very dear friend, Mr. Altaf Bukhari, that let us stop the division of votes in North Kashmir. I am, through this press conference, appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on, कि हम अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे बाकी जगहों पर, बिलखुसूस श्रीनगर में वो पार्टी जो हमें लगे कि चैलेंज दे सकती है, और वहाँ हमें लगता है कि वो चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन वो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट दैट वी इंटेंड to support them irrespective of the decision they take here, but we would make this appeal to them कि division of votes ना करें, let NT-NC votes together वो इकट्ठे आ जाएं, और जो mandate of people है which is to send a replacement, वो dream जो है पूरा हो जाए। So that was the whole idea. So इसके related अगर आपको कोई पूछना है, मजा सी है नेरान से क्या होना। Sajjad sir, you are saying apni party, but there is a outside statement from this Engineer Rashid party that he will also be contesting. फिलहाल हमारी our confabulations have taken place with some leaders of अपनी party, and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. अगर हमारा confabulation किसी और से भी हो तो we will. So you are open. I am open to anybody, but as on date, I want to restrict this to अपनी पार्टी बिकॉज उनके साथ हमारा confabulation हुआ है। अपनी पार्टी के साथ हमारा confabulation का हो गया है, सो हम उन्हीं को जो है। Sir, will you for NC vote? 100%, yes. We have already conveyed to them that we would be, because हम नहीं, whether वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था। अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो irrespective of that जो है हम। Sir, in coming days that vote combination. ये once they support us, then वो तो ग्राउंड पर बाकी लीडर्स ने करना है, यू नो। वो तो फिर ऑफ कोर्स व्हेन दे सपोर्ट उनके लोग, तो देयर लीडर्स विल कम एंड सपोर्ट अस, इफ दैट्स व्हाट यू मीन। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अब उन्होंने इतनी बार बोला है, तो अब वो लॉस इज रेलेवेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर बीजेपी एक फॉर एग्जांपल if it's a stigma, then that they are not untouched by that stigma. If anything, Umar Abdullah has been the pioneering person in that stigma, and at a very high level. So there is one was the chief minister, so foreign minister, फिर chief minister, मैं पशुपालन मंत्री, मैं शिलेग पालन चेक रुपया ये लगा। So it is that hardly that does not matter. देखो और एक चीज आपको, when you also shoot off questions at us, now 71% votes against NC. Are you telling me they are all stooges of BJP? They are all bought by BJP? Is BJP so strong in Kashmir that indirectly they have 71% votes? So when Mr. Umar Abdullah attacks us, he has to know that we represent people. He is attacking them.
not us. So let him stop humiliating the people of Kashmir and let him come and attack us on issues. Because whatever he does, maybe he's doing it unintentionally, but they end up humiliating the people of Kashmir. Stooges, sellout, traitors. They're talking about people. 71%. ये 2019 का है. और बीजेपी कौन सी बड़ी तोप है यहाँ? They've got 1.2% vote in North Kashmir and 0.2% votes in Srinagar. Statistically, the votes they got is insignificant because we lost by 6%. So in the North Kashmir game, statistically, to be significant, you need at least 6% votes. Only then you can make a difference. But statistics, I hope he understands. तो मगर ये जो है और he can seek help, but statistics is simple statistics है that बार-बार you're actually putting it in people's minds कि क्या था चीज़ है तुम चुकुमता that they are वो भी तोपे ऐसी कोई नहीं. You have to at least score in elections, in the previous elections to be. मैं किसी को they are one of the biggest parties in India, but in Kashmir Valley they still electorally are not significant as per the statistics of the last election. I will tell you something. अगर अल्ताफ साहब ने कोई बात बोली है तो आप उनसे पूछिएगा. आप वोट मांग रहे हैं ना? मैं सपोर्ट किसी से भी मांग लूँ, अब उसमें क्या है? He is a Kashmiri. I have every right to support. वो किसका आदमी है? Darling, come with a better question. That's what I expect of you. You're a senior journalist.